I don't know, but hearing sabzi wala is like one of those forever things about Pakistan. It reminds me of early mornings. कुछ चीज़ें और कुछ लोग इतने इंट्रिकेटली हमारी मेमोरीज में होते हैं, लेकिन हमें उनकी सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा शायद नहीं हो पाता. एंड इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, सब्ज़ी वाले बड़े लाइफ सेवर्स होते हैं, स्पेशली जब आपको राशन खरीदते वक्त कुछ चीज़ें भूल गई हों. आपको पता होता है कि सब्ज़ी वाला आएगा तो ले लेंगे. योर फ्रेंडली नेबरहुड सब्ज़ी मैन. एंड सम पीपल जस्ट बाय फ्रॉम देयर सब्ज़ी वालाज ओनली. दोस्ती भी तो हो जाती है, हालचाल वो भी पूछते रहते हैं और हम भी. And so they become a really important part of our daily life without us realizing it. Just to be clear, इस एपिसोड में हम सब्जी वाले की बात नहीं करने वाले, but we are going to talk about one of the most important relationships in our lives, जिनको क्रेडिट तो क्या, कभी कभार हम सही से इज्जत भी नहीं देते. I think it's about time we trash some societal norms. In today's episode, Maryam is going to be sharing with us her relationship with her kid's nanny. As someone who takes care of her children, she's adding so much value to their life. And I want to hear all about how Maryam adds value to her life in return. So, Maryam, thank you so much for being here. पहले आप मुझे बताएं कि हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं pull apart barbecue beef sandwiches. Okay, awesome. ऐसा करते हैं, पहले हम बीफ को पकने रख देते हैं, फिर उसके बाद I will come to the question. Exactly, it will take some time. Yeah. So हमें वो पहले कर लेना चाहिए. Okay, cool. Beef broth, और अगर आपके पास ना हो, pre-made ना हो, तो we can also use cubes that are market में available readily. हमने इसको इस पे एक मिनट मैरिनेशन करेंगे. Okay. इसमें हम डालेंगे पेपर, थोड़ी सी. Okay. ठीक है. Yeah. अच्छा, और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट. ठीक है ना, so that it gets the flavor. So we need actually the flavor in it and the smoke. सही. So we'll start the button. डायल का हम हिलाएंगे थोड़ा सा. ये मीट पे ब्लिंक कर रहा है, so that means कि मीट की सेटिंग हुई हुई है. Exactly. Right? Okay, So cool. all we have to do is push the button. Yeah. Start. Awesome. And I guess ये 30 मिनट के लिए पकेगा. 30 minutes, yes. Yeah. It is. इतनी देर में अगर बीफ प्रेशर कुक होती है तो it becomes soft and juicy, right? It will. So in the meanwhile हम एग बना सकते हैं. हम बिल्कुल एग बना लेते हैं. मैं इस साइड पे आ जाती हूँ, आप यहाँ पे आ Yes, जाएं. that would be easy because Yeah. मुझे अंडा बनाना है. Cool. मैं हालेपिनोस काट रही हूँ बात के लिए, ठीक है? बिल्कुल ठीक है. Maryam, so you know the reason why I called you Oh was yes. because आपसे जब मेरी बात हुई थी तो I told you, actually you told me how your house help is like family to you. Yes. और मुझे ये I mean I thought that this was such an important message मेरे इस सीज़न के लिए. So can you tell me a little bit about that? कौसर के साथ मेरा रिलेशनशिप सिर्फ एक हाउस हेल्प का नहीं है. उसके साथ मेरी पर्सनल बॉन्डिंग भी अब हो गई है. लाइक समबडी दैट आई हैव नोन फॉर अ शॉर्ट वाइल, बट उसकी लाइक्स डिसलाइक्स मेरे बच्चों की तरह ही है, समझे. जो मेरे बच्चे पसंद करते हैं तो मुझे कभी कभी लगता है कि उसको क्या पसंद होगा. तो यू नीड टू हैव दैट पर्सपेक्टिव एज वेल कि वो भी इंसान है और उसकी क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, क्योंकि वो आपके बच्चों के साथ रहती है, हमारे साथ रहती है. तो दिस इज़ हाउ इट इज़ कि हम उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं. राइट. मैं आपके लिए थोड़ा सा ऑयल पोर कर देती हूँ इस पर. बिल्कुल सही. आई एम अ लिटिल बिट मेसी. डोंट वरी विद दैट. इसको प्रेस करके करना है राइट लेफ्ट की तरफ. एक एग लेंगे, इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ ब्लैक पेपर. आपने डाल दिया ऑलरेडी. पिंच ऑफ सॉल्ट. ठीक है. इसको विस्क किया आपने, तो आपने ग्रीस कर लिया पैन थोड़ा सा. सिंस इट्स अ नॉन स्टिक सो वी डोंट नीड मच. या वी डोंट नीड मच. और हम ये इसको हमने कोशिश करनी है इवनली पोर करें, बिकॉज हमने उस पर चीज़ भी डालनी है अभी. या that actually looks really beautiful. You've done it so nicely. I have this spatula here as well, so we can lift it when it's starting to get ready. So you know how you were saying that Kausar is like family to you and all of that. And sometimes I feel like when I'm talking to people, तो अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि हाँ हम तो भाई अपनी जो हैं घर में काम करने वालों को इतना अच्छा खाने को भी देते हैं. It's like as if they're acting जैसे कि बहुत एहसान कर रहे हैं. But in reality, like food is a right, not a privilege, right?
See, this is how the mindset of our whole society is. So do you remember the first day जब कौसर आपके साथ काम करने आई थी? कौसर को recommend किया था मेरी neighbor ने. Okay. तो उन्होंने जो है भेजा, उन्होंने कहा बच्ची अच्छी है, आप उसको रख लीजिए. मैंने कहा बिल्कुल ठीक है. मेरी उनसे पहली मुलाकात हमारी शिफ्टिंग में हुई. And since that day she has not left our house. I interviewed her and she seemed a very nice girl. Yeah. And by the way, I just want to add here that by girl, Kausar is not underage. She's like an adult. But of course, this is another harsh reality, you know, of society के लोग बहुत छोटे बच्चे जो एक्चुअली जिनको स्कूल जाना चाहिए उनको हायर करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हाँ हम तो एहसान करें, उनके घर में रोटी नहीं है खाने को तो एटलीस्ट उनके बच्चे कमा रहे हैं. आई समटाइम्स फील लाइक हम बार बार लोगों को उसी साइकिल ऑफ पॉवर्टी में पुश करते हैं जब हम उनको सैलरीज कम देते हैं, उनको काम मुश्किल देते हैं, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते, तो उनकी जनरेशन अपॉन जनरेशन फिर उस साइकिल से निकल ही नहीं पाती. हम उनको we actually are a reason why they are growing. Yeah. Because हम काम करना नहीं चाहते कि even if you are privileged to have a house help, you can have, exactly, hire anyone any time, but still at least pay a decent wage to that person. Exactly. ठीक है, at least the minimum wage. I mean, I have seen people being you know, boasting about that हमने तो इतने कम में hire कर रखी है. Yeah. So I mean that is inhuman. That's not right. I think we should press the pressure cooker की वो वाला जो We button should है on end it top. now. Yeah, I think we're done. So Okay. maybe we can press cancel over here, Okay. and then we have to cancel. हाँ, cancel हो गया. अब आपको वो button ऊपर का दबा के रखना है, so that it releases the pressure. Okay. Yeah. The scary part. I know, this is scary. But this cooks so fast. Like while you're making an egg and you're making the sauce and you're cutting up the jalapenos, आपका beef ready है. Already. And beef takes a really long time to cook. अच्छा, ये मेरा ख्याल है done है और Okay. हमें ये निकाल लेना चाहिए. ये I लीजिए. have pressed and taken out all the pressure. Yeah, just be careful when Yeah. you open that. One needs to be every time. Yeah, that's a lot of steam. Yes, it did is. That looks so nice and soft and juicy. It is. It is. I mean, the broth has made it so Yeah. juicy, and it's soft. ये So do you want to shred this? I'll get you the barbecue sauce. Sure. You can use this knife also. exactly ये मैं कर लेती हूँ. आप जो है वो सॉस में मेरी हेल्प करें. Yeah, I'll pour this for you. So approximately कितना? 1 tablespoon, somewhere around one is enough. Yeah. If you are like इतना थोड़ी सा सी थोड़ी सी beef generous है. कर रहे हैं. हाँ, Yeah. क्योंकि हमारे पास बीफ जो है हमने थोड़ा सा लिया था because we all wanted to make sandwiches only for Yeah. us. So yes. और इसके बाद हम वो मेयो वाली सॉस भी बनाएंगे, right? बिल्कुल बनाएंगे. So why don't you take a bowl? Yeah. So I'm just going to put some jalapenos, you said. और क्या डालना है सॉस में? हम डालेंगे थोड़ा सा मायो. मेयो आपने डालनी है somewhere around 2 to 3 tablespoon so that. ठीक है, मैं अंदाजे से डाल. अच्छा, the exact recipe, of course, when you have the exact quantity of the beef, of course you need to measure everything. Yeah. But we are making it a small batch, so we'll go with andaze se. Okay, cool. So I've mixed the jalapenos. And some red chili peppers Okay. and ketchup. Okay. ठीक है. और Salt to taste. सही है. और सॉल्ट तो बहुत थोड़ी बिल्कुल- सी डालनी होगी बिल्कुल because इसमें हल्का सा, केचप भी हाँ. डला हुआ है. And then the garlic powder. The garlic powder goes in, yes. और वो जो jalapenos हमने डाली हैं, that's going to give a really nice थोड़ा सा Take to yeah, exactly the tangy flavor that we require for the barbecue. yeah. This is smelling really good, by the way. The only with the sauce, it is really flavorful now. Yeah. So, you know, right now you were telling me about Kausar. मुझे कोई ऐसा experience बताएं या कोई ऐसी memory बताएं Kausar की that you know really touched your heart that you remember to this date. हम जो हैं आज मैं जो हूँ कौसर के साथ आजकल समझे I talk about everything with her. It's like giving her an idea of an outside world. अभी recently आप believe करेंगे that I was telling her that you should be able to save something from your own hard money. You should not be giving it all together for of course since they are poor
So yeah, they send their money back. But then I asked her, तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं है, तुम कुछ लेना नहीं चाहती हो, तुम्हारा भी कुछ दिल करता होगा. And that's such an important conversation to have because you know जिस तरह से हम कहीं जॉब करते हैं तो हमारी mentorship होती है, HR होता है, हमें वो हेल्प करते हैं. वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है that when you have a house help, you need to train, educate and make that house help aware. Yeah, because you know if you are blessed with the privilege of education, of exposure, तो आपको वो pass on करना बहुत necessary, and I think a lot of people don't understand that. Okay, so is your beef cooled down now? Maybe you can mix cooled in your down and sauce. with the sauce. Do you want me to toast the bread in the meanwhile while you're doing the Yes. mixing? मैं बहुत अच्छी helper हूँ by the way. वो I can see. I'm like over efficient. अच्छा, हमारा बीफ मैरिनेटेड हो चुका Yeah. बारबेक्यू सॉस से. हमारी Sauce बन चुकी मेयो है. सॉस भी रेडी है एंड हमारा एग भी रेडी है. Right. So now we just have to make the layers. एग्जैक्टली. ठीक है. So we can make the layers and start putting them over here. We can make one sandwich to show everyone. बिल्कुल सही. I'll just wait for the bread to toast. 3 आपको slices चाहिए होंगी, right? For 3 layers. Exactly. It's a loaded sandwich. Yeah. So yeah, we do need. अच्छा, हम यहाँ थोड़ा सा मेयो लेके इस बीफ में भी थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे because we need more flavor. They're nicely. Wow, they are very toasty. Yeah, golden. they're so nicely browned. So we're going to make layers now. जैसे club sandwiches basically होते हैं. बिल्कुल exactly club sandwiches. यहाँ अपना मेयो लगाएंगे. Yeah. So if we've already put the mayo in, तो हमें इधर और लगाना होगा. थोड़ा सा so that everything sticks properly. Okay. वो भी हमारी टॉप लेयर के लिए चाहिए होगा so that your beef does not come out. Yeah. Usually आपका होता है कि आप वो जाते हैं और you have ordered a club sandwich somewhere. I hate when that happens and the stuff I mean the falls out. center is all off. Yeah. They don't put much. Okay, that's also done. My expert toasts are also done. Can I just borrow this for a second? Sure. I like that how this rack has like lines so the bread isn't getting soggy. The bread does not get soggy and Yeah. it's great. I love this, you know, I love what this looks like because I can almost taste it. Tastes Exactly. really I mean nice. one wants a very generous amount of. Yeah, it's nice and juicy. Exactly. Okay. इसके अच्छा हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे so that it does not fall out since it's all shredded beef, right? Okay. इसके ऊपर हम थोड़ा सा हाँ ये लगाएंगे एग. हम इसकी प्लेसमेंट कोशिश करेंगे. Okay, that looks cute. Yeah, it Do you want does. to cut into half? So, you know, after this, we're actually going to have Kausar at the dinner table with us. Are you excited? Because, you know, it's going to be nice to sort of host her and to cook for her. Honestly, when I told her that I asked her for her consent before you called me Yeah. for the show. So I had asked and she was all so happy that we are going to go to some very she's going to talk about her experiences. Yeah. Is she fond of sandwiches? She is fond of burgers, pizzas, everything. So this looks really good, right? It looks tempting. I would say it turned out good. मैं आपको निकाल के दूँ. बिल्कुल please. कौसर आपको सैंडविचेस पसंद है? बिल्कुल प्लीज. थैंक यू. कौसर आपकी कैसे मुलाकात हुई थी पहली दफ़ा? आपको याद है पहला दिन मरियम के घर पे? जी मैं आई थी तो काम करने के लिए. भाई से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा मिलके. फिर? पहले तो मैंने दिन का शुरू किया हुआ था, फिर रात दिन का बच्चों की खातिर, फिर रात दिन का किया था. बच्चे क्लोज हो गए थे बहुत फौरन. ज़्यादा जी. तो उनकी I mean, खातिर we फिर- were shifting the house and then one day she was there. तो उन्होंने कहा आके अपनी मेड से मिलिए. तो पहले दिन इसने मुझसे बड़ा इसे कहते हैं ना बड़ा वार्म वेलकम होता है. हाँ. तो she greeted me very nicely and she asked my name. अच्छा. मेरी भाभी का क्या नाम है? अच्छा से ये बोला. Oh, yes, I do still remember that. तो बहुत जिसे कहते हैं ना and then she played with the kids. I Yeah. didn't knew I was working. सारा काम हमने किया and then हमें नहीं पता बच्चे कहाँ गए.
after that it was the kids were like कि नहीं भाई हम तो सेट हो गए. बच्चों की फ़ौरन आपके साथ बॉन्डिंग हो गई थी. जी और आपको क्या लगता है कौसर, सोसाइटी में जनरली इसी तरह की रिलेशनशिप होती है लोगों की अपने हाउस हेल्प के साथ, अपने साथ जो लोग काम करते हैं उनके साथ? हर जगह पे देखो तो ऐसा नहीं होता है. बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो अच्छे से रखते हैं, अच्छे से ख्याल रखते हैं, सब कुछ है. तो भाभी जो खाने बनाती है उसमें से बेस्ट आपको क्या लगता है? भाभीजान के बेस्ट है मुझे लगता है बिरयानी. बिरयानी? मेरी जी. बिरयानी मेरी भी फेवरेट है वैसे तो. बिरयानी इन लोगों को लगता है, ये कहते हैं मतलब फरमाइश करते हैं कि बनानी ये आपने फरमाइश है. करती हैं? ये मीठे की फरमाइश मैं करती सबसे हैं. ज़्यादा मीठे की फरमाइश करती हूँ अच्छा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है. कौन सा मीठा? कोई भी सबसे अच्छा, आज तो ज़्यादा. लेकिन हमने मीठा नहीं बनाया, सॉरी. ओके कोई मसला नहीं है. तो